Hi, hello, this is your Lucky sir. Preparation of carboxylic acids we'll discuss now. Carboxylic acids are compounds which are having COOH group. When COOH group is present, they are known as carboxylic acids. So, how to prepare the carboxylic acids? First one, from alkenes. From alkanes we can't prepare directly, but from alkenes we can prepare. But the condition is there should be at least one hydrogen on vinylic carbon. Vinylic carbon means, for example, you see, this is double bond carbon. This must contain at least one hydrogen. Then what happens, you see, R, C, R, double bond C, R and R. If you are going for oxidation of this, no hydrogens are here on the vinylic carbon. This will give you 2 moles of ketone. So this is not your choice. At least one hydrogen means this bond will break now and this part will become acid RCOOH. It also becomes RCOH. Simple, you see. R C H double bond CH2. For example, this is your choice. Break this. One hydrogen is here, so this part will become acid. Here two hydrogens are there, this part will become carbon dioxide. That means double bond CH2 group will be converted to CO2. Double bond CHR group will be converted to acid. Double bond C, both R groups are attached, converted to ketone. If double bond carbon has two hydrogens, that will be giving you carbon dioxide. If double bond carbon, if it is having one hydrogen converted to acid, double bond carbon with two alkyl groups will be converted to ketones. Very very simple equation. इतना अब याद रखेंगे तो आराम से बन जाएगा. Next, alkynes. Alkynes on ozonolysis and on oxidation give carboxylic acids. Okay, now here ozonolysis must be in the presence of hydrogen peroxide. For example, R C triple bond or alkyne. Alkynes में carbon carbon triple bond होगा. You need to break this triple bond, and that you are doing in presence of ozone and H2O2 RCOH RCOH. Or KMNO4 also you can use. KMNO4 also breaks this and makes this RCOH and RCOH. We don't use this reaction much, but we can prepare from alkanes on ozonolysis or and on oxidation using KMNO4. From alkyl benzenes. Alkyl benzenes, irrespective of length of carbon chain, you see C6H5 attached to carbon, here R group is there, R may be methyl, ethyl, propyl, irrespective of length of carbon chain, this will be converted to acids. It is not like this. R is converted to C6H5, CH2, COOH. No, 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 a big no, a very big no. This is not like this. Whatever the carbon attached to the phenyl group, that carbon, benzylic carbon, that will be converted to COH. इतना ही होता है बस. अब देखो यहाँ पे ये CH3 है, बन जाएगा COH. फर्दर पर्पज यू कैन यूज KMNO4 इन बेसिक मीडियम. KMNO4 आप बेसिक मीडियम में यूज करेंगे, CH3 बन जाएगा COH. फाइन. You see one more reaction. Here you see how many carbons are there, CH2, CH2, CH3. Irrespective of length of carbon chain, this part will be converted to COH. ये नहीं बनेगा, this is not converted. Okay, now of course this part will be converted to another acid. We are thinking about only benzoic acids. Okay, look at this reaction. This also gives you benzoic acid. Again, same problem. At least one hydrogen is mandatory. For example, here it is having all three carbon atoms. Then there is no reaction. तो यहाँ पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए. बेंजाइलिक पोजीशन
must be with one hydrogen, otherwise there is no reaction. Here you see, except this case, remaining all, irrespective of length of carbon chain, they will be converted to acids. Very simple equation. Gem trihalides. Geminal means on the same carbon, 3 halogen groups if they are present, they are called geminal trihalides. For example, CH3, C, chlorine, chlorine, chlorine. All these will be converted to OH, OH and OH. A water molecule is lost, CH3, C double bond OH. One carbon with more than one OH group is unstable, so it loses water molecule and turns into acid. You can see here CH3 is there, RCOH. Simple example. You can see one more example here, C6H5, CCl3. So C6H5, C, Cl3 means all these will be converted to OH groups. When they are present, one water molecule is lost. 3 OH groups on same carbon unstable. ऐसे एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो आप, एक वाटर ड्रॉप निकाल दो, नहीं तो सिंपली हो गया ना. This is very simple. You see, H, you keep it as it is, Cl3, H, C, OH, OH, OH. One carbon with more than one OH group unstable, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, ये आपका बन जाएगा HCOH. Very simple reaction. From primary alcohols. Primary alcohols on oxidation give carboxylic acids as end products. Okay, first mild oxidation करेंगे तो आपको aldehydes मिल जाएंगे, बाद में they will turn into acids. For example, you see RCH2OH, this is a primary alcohol. This primary alcohol on oxidation became RCOH, final product. But actual product is, you see, CH3CH2OH, first it turns into aldehydes. Aldehydes even on mild oxidation will give you acids. CH3CH2OH is 1 degree alcohol, primary alcohol, converted to aldehydes, it is converted to acids. Very simple reaction. You see, aldehydes, directly from aldehydes. And what about the secondary and tertiary alcohols? Just now I told you about the primary alcohols. Secondary alcohols अगर आप लेंगे तो RCHROH, this is a secondary alcohol. It will be giving you RC double bond OR. ये आपका कीटोन बन जाएगा. So कीटोन से आप easily नहीं बना सकते हो. You can prepare that reaction also I will give you. That rule is known as Popov rule. उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी. लेकिन प्राइमरी अल्कोहल्स डायरेक्टली आपको एसिड्स बन जाएंगे विदाउट एनी चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. दैट इज द एडवांटेज. सेकेंडरी अल्कोहल्स या टर्शियरी अल्कोहल्स आप लेंगे तो क्या होगा, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल ऑल्डिहाइड्स, एज वी आर डिस्कसिंग, ऑल्डिहाइड से वेरी सिंपली RCOH बन जाएगा. उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी ज़रूरत नहीं है. आप छोटे से छोटा ले सकते हो, लाइक फैलिंग्स रिएजेंट. यहाँ पे अपना टाइपिस्ट H भूल गया, टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, KMnO4OH, K2Cr2O7, HNO3. Any oxidizing agent can easily oxidize aldehydes to acids. कीटोन्स के लिए वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप होता है. ये देखो आपका कीटोन है. Here this is unsymmetrical ketone. You see here 3 carbons are there, here 1 carbon is there. Now the bond will cleave in such a way so that C double bond O is retained with a small site. So यहाँ पे आपका break हो जाएगा. This rule is called Popov rule. Very simple. You are going to break this bond. Okay, now CO, this side 1 carbon is there, this side 3 carbons are there. CO will be with the small group. So ये 3 carbons का acid बन जाएगा, ये 2 कार्बन का एसिड बन गया. If you want one more example, I will give you here. Double bond O, break COOH plus COOH, 2 carbons. Only 3 carbons are there. Same है, कौन सा भी एक्स्ट्रा ब्रेक कर दो. CH3COOH,
another HCOH, or you can say carbon dioxide directly, no problem. Okay, this is one very interesting point. तो हम इससे पहले सेकेंडरी अल्कोहल्स या टर्शियरी अल्कोहल्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन एक बार पीछे जा कहेंगे. प्राइमरी अल्कोहल्स आप लेंगे तो फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स aldehydes, aldehydes विल बी गिविंग यू एसिड्स. इस पूरे रिएक्शन में कहीं पे भी नंबर ऑफ कार्बन्स डू नॉट चेंज, नंबर ऑफ कार्बन्स सेम. इससे पहले मैं आपको दिखाया था CH3 CH2OH 2 कार्बन है, CH3 CHO 2 कार्बन है, CH3 COOH 2 कार्बन है. नंबर ऑफ कार्बन्स डू नॉट चेंज. But if you are taking a secondary alcohol on ketone formation, no change, but after that it is going to form 2CH3COH. Number of carbons decreased. टर्शियरी के तो बात ही मत करो, वहाँ पे रिएक्शन होता ही नहीं. टर्शियरी alkenes do not, tertiary alcohols do not give you any aldehyde or ketone. So उसके बारे में देखने की ज़रूरत भी नहीं. अब देखो मिथाइल कीटोन्स ऑलवेज गिव यू ए रिएक्शन वेरी स्पेशल कॉल्ड एज हैलोफॉर्म रिएक्शन. हैलोफॉर्म रिएक्शन होता क्या है? ओके, अल्फा मिथाइल कीटोन्स अगर आए तो अल्फा मिथाइल, दिस इज कॉल्ड अल्फा मिथाइल कीटोन. दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है. इस ये डबल बॉन्ड है, सॉरी, ये दिस इज अल्फा कार्बन. ऑफकोर्स यहाँ पे जितना भी कार्बन से, फॉर एग्जांपल सी ऐसा है तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा ऐसा होता है. ये अल्फा कार्बन, ये जो भी अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर अगर 3 हाइड्रोजन्स आए तो दिस 3 हाइड्रोजन्स विल बी कन्वर्टेड टू हैलोफॉर्म. फॉर एग्जांपल CH3 CH2 C double bond O CH3. If you are treating with chlorine by OH minus, it will be giving you CH3 CH2 COO minus प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म. इसको आप बाद में एसिडिफिकेशन करेंगे इसके साथ में, तो ये एसिड बन जाएगा. सो यू कैन से द ब्रेक इज हियर, दिस विल बी कन्वर्टेड टू आइडोफॉर्म और यू से क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म. हैलोफॉर्म रिएक्शन यू कैन से. वेरी 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 स्पेशल. और कुछ डाउट है तो हैलोफॉर्म के ऊपर अपना एक स्पेशल वीडियो है, उसको आप देख लो. कौन सा कंपाउंड्स रिएक्शन देता है, इसके ऊपर अच्छा वीडियो बनाए, उसको आप देख सकते हो. यू कैन सी दैट. Okay, in naming reaction category in carbonyl compounds playlist you can go and you can check. From nitriles means a cyanide beta. When cyanide group is there, that will be converted to acids. That is very easy, simple. That reaction is called hydrolysis, addition of water, or C triple bond N. This is cyanide. On hydrolysis, okay ना, एसिड्स एज वेल एज बेसिस कुछ भी चलेगा, आपको यूज़ करेंगे तो COOH बन जाएगा. यू कैन यूज एसिड और बेस. ओके, हियर रिएक्शन विल बी गिवन. यू कैन सी वन एग्जांपल. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, यू सी, साइनाइड व्हेन यू आर टेकिंग, इफ यू आर यूजिंग बेसिक मीडियम आप यूज़ करेंगे तो एक्चुअली आपको ये मिलता है RCOOH एंड NH3. बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, ये एसिड जो भी बनेगा ये आपका सॉल्ट फॉर्म में मिलेगा. एसिड विल बी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट फॉर्म. अगर आप एसिडिक मीडियम में यूज़ करेंगे तो दिस विल बी इन द एसिड फॉर्म, एंड हियर दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ NH4 प्लस. Okay, because here acid है, so NH3 will react with acid to form NH4 plus. Here base acid बनता है RCOH, लेकिन आप बेस मीडियम यूज़ कर रहे हो तो बेस के साथ में ये बन जाएगा RCOO माइनस. कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Of course later we go for hydrolysis here in both the cases, in presence of acid medium, in presence of basic medium. So you will be finally getting RCOOH and NH3 type. Okay ना, irrespective of लेंथ ऑफ कार्बन चेन्स यू कैन टेक. बट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे हम टाइपिंग करने में भूल गए. दैट इज RNC अगर आप लेंगे तो क्या होगा, दिस इज आइसोसाइनेट. व्हाट हैपेंस इफ यू आर टेकिंग आइसोसाइनेट? इट्स वेरी सिंपल. इफ यू गो फॉर हाइड्रोलिसिस, it becomes primary amine
plus HCOOH. Whatever the isocyanate you are taking, your product is same. That is formic acid. Irrespective of nature of isocyanate, the product will be always formic acid. बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. छोटे छोटे वीडियो करेंगे, सोचे थे ये ऑलरेडी बहुत ही बड़ा हो गया है, और एक वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे. प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. थैंक यू बच्चों. जस्ट go with this. Okay, now if you like this video, then definitely you try to share this. It should reach maximum number of students. If you like, only if you like. Done. Thank you.